Assalamu alaikum, my dear class 4. How are you all? I hope all the students are good. So class 4, it's English lecture and it's Thursday 21st of January. So okay, come to your lecture and today we are going to do the application. Okay, so you have to do this application in on the loose sheets and you have to submit me with your worksheets. You have to staple the loose sheet with your worksheet and then I will get it checked for you. So okay, write an application to the principal for an urgent piece of work. आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है किसके लिए, अपने प्रिंसिपल के लिए, और आपने उन्हें बताना है कि आपको अर्जेंट पीस ऑफ वर्क यानी आपको एक ज़रूरी काम है, उसके लिए आपको छुट्टी चाहिए. ओके, द फर्स्ट यू विल राइट द प्रिंसिपल, comma, then you will write Jinnah Officer School, comma, then you will write Lahore, full stop, then you will write respected madam, comma. Okay, so you all have to write this commas and full stop because this carries marks. Okay, रिस्पेक्टेड मैडम के बाद आप थोड़ी सी स्पेस है कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे. अस्सलामु अलैकुम, मोस्ट रिस्पेक्टफुली. फर्स्ट यू विल डू द ग्रीटिंग, देन यू विल से मोस्ट रिस्पेक्टफुली. बहुत रिस्पेक्ट के साथ आप अपनी बात स्टार्ट कर रहे हैं. यू आर सेइंग आई वांट टू डाइवर्ट. मैं डाइवर्ट यानी मैं आपकी मतलब डाइवर्ट करना यानी चेंज करना. आई वॉन्ट टू डाइवर्ट योर काइंड अटेंशन. में आपकी जो अटेंशन है, आपकी जो अटेंशन है वो मैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ यानी डाइवर्ट करना चाहता हूँ, यानी अपनी एप्लीकेशन की तरफ डाइवर्ट मतलब लाना. आई वॉन्ट टू डाइवर्ट योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स माई एप्लीकेशन. आपकी जो अटेंशन है, आपको जो मतलब कि आप कह सकते हैं कीमती वक्त है, आपकी जो टेंशन है वो मैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ लाना चाहता हूँ. डाइवर्ट मीन्स आप किसी बंदे को किसी और काम, एक काम से दूसरी काम की तरफ अगर आप उसका माइंड जो है दूसरी तरफ लगाएं तो उसको कहते हैं डाइवर्ट. तो आप सबसे पहले उन्हें बड़े अच्छे से आप उनको सलाम करेंगे, फिर आप बहुत इज़्ज़त से कहेंगे कि मैं आपकी जो अटेंशन है, आपका जो आपकी तवज्जो जो है वो अपनी एप्लीकेशन की तरफ लाना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू से, मैं ये कहना चाहता हूँ डेट आई हैव क्या लिखेंगे आप आगे? डेट आई हैव एन, यस क्या है मेरे पास? डेट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम. सो फिर अब आप क्या लिखेंगे आगे? डेट आई वॉन्ट टू से डेट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क. सो अब आपको छुट्टी चाहिए. सो व्हाट यू विल राइट? सो आई want a holiday. For how much holidays you want? 2 or 3. So you want leave. Okay, so आप क्या लिखेंगे? I want to say that I have an urgent piece of work at home, so kindly grant me. Yes, आप हमेशा जिस तरह लिखते हैं एप्लीकेशन में, किस तरह लिखते हैं कि kindly grant me 1 or 2 day leave. और फिर एंड आप कैसे करते हैं? यू ऑलवेज से थैंक यू इन एंड. आपने इसी तरह ही अपना एंड करना है. पहले आपने कहना है कि आई वांट टू से दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, देन यू विल से दैट आई वांट लीव्स ऑफ 2 to 3 days, then you will thank your principal for it, for giving you the leaves, and then you will end your application. Then in the end you will write yours obediently, comma, then you will write your name, then you will write the class and then section after the class, and then you will write the date in the date जब आप लिख रहे हैं उस लेटर को, एप्लीकेशन को. ठीक है. सो दिस इज़ योर पैटर्न एंड आई हैव टोल्ड यू द फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन एंड you have to complete it. Okay, so complete this application and send it to me. Do this application on the loose sheet. Okay, so staple this loose sheet with your worksheet. So okay, do this very carefully. Till then, take care. Allah Hafiz.